Hello students, let's come to our next lesson. Question number 4 of exercise 1A. It is from relation function class 12. So we have to find out the list of members of the equivalence relation defined by the following partition X on the set X. X रे चारटा element আছে 1 2 3 4. Also find the equivalence classes of 1 2 3 4. Okay, so हमको सही partition माने दे दीजिए. One, the first one is 1 2 3 4. Partition टा दे दीजिए. So here we have 1 ର equivalence class रे जेहेतु खाली 1 अच्छे, जेहेतु खाली 1 अच्छे, so equivalence class of 1 रे खाली 1 रा. You can say that the equivalence class of 1 is only 1. Equivalence class of 2 रे खाली रहबा 2. Equivalence class of 2 रे खाली रहबा 2. But in the equivalence class of 3, in the equivalence class of 3, it is 3 and 4. जेहेतु 3 और 4 टा इंटररिलेटेड अछन ताकर पार्टीशन रे अछन, which is SMH equivalence class of 4. So now what is the equivalence relation? So for this set or for this partition, the equivalence relation must be 1 is only related to 1. 1 is only related to 1. So it is only 1 1. Okay. Now 2 is only related to 2. So 2 is only related to 2. Now 3 and 4 are interrelated. So we can write such 3 with 3, 3 with 4. Now 4 is 3 and 4 with 4. Now 3 is in relation with 3 and 4 and 4 is in relation with 3 and 4. So it is the equivalence relation for the partition 1, 2 and 3, 4 wala first one. This one. Now for the second one, we have the partition like 1, 2, 3 and we have another partition 4. So we have two partition. On the first partition it is 1, 2, 3. It is equivalence class of 1, which is SMH2, which is SMH3. That is 1, 2, 3. On the equivalence class of 1, it is 1, 2, 3. Means 1 is in relation with 1, 2 and 3. 2 is also in relation with 2, 1, 2 and 3. 3 is also relation with all 3. Now 4 here. Equivalence class of 4 is only 4. 4 is alone. 4 के सबे छाड़ी दी हम के ताके 9 भले लागला ए जगह रे 3 के संग नै गीतला पहला तेरे तो सेकंड तेरे सबे एकला छाड़ी दी हम नहीं. So equivalence class of this partition is equal to काना कहि परमा 1 टा 1 संगे रिलेट करू छे, 1 टा 2 संगे रिलेट करू छे, 1 टा 3 संगे रिलेट करू छे. Now 2 is in relation with 1, 2 is in relation with 2, 2 is in relation with 3 and एते 2 टा एते लोकर संगे रिलेट करू छे, 3 is in relation with 1, 3 is in relation with 2, 3 is in relation with 3. So 1 2 3 रो सरी गला सबे निजर निजर संगे इंटर रिलेटेड अछि. और 4 टा के बुपरा के एकला छाड़ी देछन, बिचरा के एकला छाड़ी देछन. So 4 एकला रही गला. Okay, so this is the equivalence relation for the partition of the set 1 2 3 4. Okay, now let's come to the last one. It is equivalence relation for the partition. It is 1 2 3 and 4. Now this is the partition, only one partition. So everyone is related with everyone. So equivalence class of 1 is equal to equivalence class of 2 is equal to equivalence class of 3 is equal to equivalence class of 4. Okay, so which is SMH 1 2 3 4. Means 1 is in relation with all, 2 is in relation with all, 3 is in relation with all and 4 is also in relation with all. So the equivalence relation is equal to 1 with 1, 1 with 2, 1 with
3, 1 is also with 4, 1 the sorry ଏବେ 2 ର now 2 is in relation with 1, 2 is in relation with 2, 2 is in relation with 3 and 2 is in relation with 4. Now let's come to the next line. Okay, जगह अच्छे तो हमें जगह यूज करनी है. So 3 is in relation with 1, 3 is in relation with 2, 3 is in relation with 3 and 3 is in relation with 4. Okay, 1 सबकोट संगे रिलेशन रहला, 2 भी सबकोट संगे रिलेशन रहला, 3 भी सबकोट संगे रिलेशन रहला. 4 के भी बुकरा के जगह एकला कर देथिला. एबे ताके भी सबकोट संगे रिलेशन रखमा. So 4 is in relation with 1, 4 is in relation with 2, 4 is in relation with 3 and 4 is in relation with 4. Okay, so this one with the equivalence relation for the partition. Okay, now let's come to our next question. It is, so that R is an equivalence relation on X, then domain of R is equal to range of R. Okay, बेसी बड़ क्वेश्चन में R गोटे इक्विवेलेंस रिलेशन बोली से कहूँ. ओके, ऑन द सेट x, x जहाँ भी है जदि इक्विवेलेंस रिलेशन है, then we have M, or you can say that AA, our first one reflexive, so this implies R is reflexive. If R is an equivalence relation, then R is reflexive. जदि reflexive है तो AA belongs to R for all A belongs to X. X रे जेतेटा एलिमेंट अच्छन सबे निजके रिलेट करे. तो A रे जहाँ रहला इनो जहाँ पुट हवा ए जगह रे भी तहाँ पुट हवा. मीन्स जदि लेट मोर पाके तीनटा एलिमेंट अच्छे 1 2 3 वाला सेट अच्छे तो 1 1 2 2 एंड 3 3. तो डोमेन रे 1 2 3, रेंज रे भी 1 2 3 सब एलिमेंट बोले आसे. So we can say that, so for this implies domain of R is equal to range of R is equal to X. Okay, so this is the solution for the question number 5. Question number 6 रे example मैंने given the one like होइछे. So से question नहीं करबा. Hope that you can do by your own. Next question के जिमा, that is question number 7 के गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टे अछि. से कहू जे हमर पाके गोटे सेट टे अछि. Let we have a set X. Okay, let R be a relation on set X. If R is symmetric, जदि R टा symmetric हला, okay, not a problem. Symmetric जदि अछि तो से कहू जे X Y belongs to R. So this implies YX also belongs to R. Okay, जदि सिमेट्रिक है तो XY थिला YX अछि. आउ जदि सिमेट्रिक भी हैला आरो ट्रांजिटिव भी हैला तो XX भलिया एलिमेंट माने भी अछन, YY भलिया एलिमेंट माने भी अछन. इफ सिमेट्रिक. सिमेट्रिक. ओके, जदि ट्रांजिटिव हैला, if also transitive, this implies then, or you can say that then XX belongs to R and YY also belongs to R. सेटा ही कोई जैसे symmetric, then X relation with Y and Y also relation with X. It is also transitive, then X relation with Y and Y relation with X. This implies XX टा तार relation रे अच्छा. So जदि कोनोसी भी जगह रे जदि कोनोसी भी रिलेशन टा सिमेट्रिक भी हैला ट्रांजिटिव भी हैला तो सेटा मस्ट बी रिफ्लेक्सिव होबा के. then it must be reflexive or not. Okay, से कहै छै, so whenever a relation is symmetric and transitive, then it is also reflexive. यदि symmetric transitive हैला then एटा reflexive होबा बोली से कहि दी. ई आर्गुमेंट रे रॉन्ग काना अछि, भूल काना अछि, आउ सितरे काना ठीक करा जाई पाबा. ओके, जदि XX बोलिया एलिमेंट रिलेशन रे अछन तो रिफ्लेक्सिव हम कहि परमा के. रिफ्लेक्सिव रो डेफिनेशन काना, इतरा हम रिफ्लेक्सिव रो डेफिनेशन कहूछु से कहू छै XX belongs to R
for every x belongs to R, or for every x belongs to the set x. x रे जेतेटा एलिमेंट थे समस्त लगे किंतु इ जगह एक्स वाई आउ वाई एक्स समस्त लगे तो नुह. So let we have a element one, we have a set 1 2 3, then let this one will be x. Okay, so we have a relation 1 1 1 2 2 1 and 2. Okay, this relation are is transitive and also symmetric. Okay, symmetric तो हमें प्रूव कर दे पारबो, ट्रांजिटिव बोले भी प्रूव कर दे. देखो 1 2 अच्छे 2 1 अच्छे तो 1 1 भी अच्छे और 2 2 भी अच्छे. So it is also reflexive, also transitive, but it is not reflexive. कहते हैं reflexive में से H 3 3 does not belongs to R. So that's why you can say that this one is not reflexive. Okay, so if whenever a relation is symmetric and transitive, it must not be, or you can say that it not always reflexive. It not always reflexive. सबुले रिफ्लेक्सिव नहीं हुए तार माने नुहे से जे रिफ्लेक्सिव ही नहीं सबु बेले नहीं हुए केते केते बेले हेबा भी. ओके, सबु थिला जदी सबु एलिमेंट रे लागि सिमेट्रिक होउची, रिफ्लेक्सिव होउची, ट्रांजिटिव होउची, देन इट मस्ट बी रिफ्लेक्सिव सबु एलिमेंट रे लागि. ओके, से जगह रे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रे एक्स रो सबु एलिमेंट पार्टिसिपेट करती बार कथा. इट इज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्सिव. So it is in the argument, it is false that for not for all, it's for some specific example, not for all. Okay, जैसे सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गला एंता टाइप रो एलिमेंट बने 3 3 वाला एलिमेंट बने भी अच्छम से जगह रे फॉर रिफ्लेक्सिव. Okay, that's why it's contradict that if its relation is symmetric and transitive, it also reflects. Okay, now the next one. Let's come to our next question. Suppose a box contain a set of n balls. Suppose गोटे box रे n टा ball अछि. Let we have a box. We have n set of balls. N balls, set of balls में n टा ball अछि where n is greater than or equal to 4. Okay, इस जगह रे let आमर पाखे red ball अच्छे, red ball किछि अच्छे. Let आमर पाखे ब्लू बॉल किछि अछि, स्काई कलर लेट हमर पाखे किछि ब्लू कलर बॉल अछि. ओके, और कना अछि लेट ग्रीन एंड येलो. लेट वी हैव सम येलो बॉल्स. ओके, होप it can seize, and we have some green balls. Okay, now this is for just for understand. 4 different color may have different size. Size does not matter. Any relation are defined as B1 B2 where B1 and B2 have same color. Okay, so दुटा relation केते बेले रहबे if B1 and B2 have same color. जदि समानकर कलर समान देन समान रिलेशन रे रहे. ओके, बुझवा लगे ट्राई करो. सो फॉर रिफ्लेक्सिव बॉल 1 which always in relation with ball 1 केंतले निजे बॉल 1 टा जदि रेड हैला आरो बॉल 1 टा भी रेड हबा केंतले निजे निजर संगे समान कलर सदा बेले देबे. जे कोनसी बॉल भी जदि मैं लेट बॉल गुटे बॉल आनली से निजर संगे जदि सेटा ग्रीन है तो सेटा ग्रीन है, सेटा ब्लू है तो ब्लू है, रेड है तो रेड है, येलो है तो भी येलो है. कि जदि मुई थरे से बॉलटा के बॉक्स रु कालनी रेड थिबा आ थरे से बॉलटा फिर पके देबे और से बॉल के फिर थरे कालले येलो देबा के नहीं दिए. सो बॉल 1 टा सदा बेला बॉल 1 संगे रिलेट होबा. एवरी बॉल इज इन रिलेशन विथ इटसेल्फ. केंते लागी सबे निजर संगे कलर समान. So that's why you can say that ball 1 is in relation with ball 1 for every B. For every B1 belongs to the box.
ओके नाउ एबे जदि मैं कहमी लेट ball 1 is in relation with ball 2. Okay, so for this it is R is reflexive. सबे निजर संगे समान कलर रहे कि बॉल 1 टा लाल भी रहबा येलो भी रहबा नहीं रही पारे सो दैट्स व्हाई सब बॉल निजर संगे रिलेट कर नाउ इफ B1 and B2 belongs to R that implies ball 1 and ball 2 have same color. बॉल 1 और बॉल 2 रो समान कलर है दिस इंप्लाइज बॉल 2 एंड बॉल 1 बॉल 1 रो कलर जहा बॉल 2 रो कलर था इट मस्ट बी बॉल 2 रो कलर जहा बॉल 1 रो भी कलर था ओके खाली जस्ट इंटरचेंज बॉल 2 एंड बॉल 1 हैव सेम कलर किछि ना खाली लिखवार छै हमको सो वी कैन से दैट बॉल 2 B1 also in relation with R so we have RH symmetry. Okay, now the next one. So if maybe I got a ball number, so let ball 1 and ball 2 is in relation with R, okay, and ball 2 and ball 3 is in relation with R. Okay, let मुझे देखो हमें maybe let red color. Okay, ball 1 रा color हला red. बॉल 2 टा भी B1 संगे रेड कलर होचे सो बॉल 2 टा भी रेड कलर है ओके जेहेतु बॉल 2 टा रेड कलर है बॉल 3 भी रेड कलर हो सो बॉल 1 और बॉल 3 सेम कलर है लेकिन ऑब्वियसली है दैट्स व्हाई यू कैन से दैट इफ B1 B2 in relation that implies B1 and B2 have same color. If B1 and B2 have same color, this implies B2 and B3 also have same color. B2 and B3 also have same color. So this implies B1 B2 संगे color समान है B2 टा B3 संगे समान color है so you can say that B1 and B3 have same color. So this implies R is transitive. Okay, so जदि मैं अलगा कौन सी बॉल ने भी let we have ball blue ball आ गुटे बॉल अच्छे आ गुटे बॉल अच्छे ओके सो जदि मैं कहमी एबे बॉल 1 एटा हला बॉल 1 बॉल 2 और बॉल 3 बॉल 1 और बॉल 2 रो कलर जदि समान है बॉल 2 और बॉल 3 रो कलर समान है बॉल 1 और बॉल 3 रो आल्सो कलर समान है चेंज तो नहीं है ओके सो you can say that so this implies जेहेतु इटा रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव you can say that R is equivalence. Okay, so this is all about question number 8. Okay, now find the number of equivalence relation on set X. Okay, number of equivalence relation on X. We can talk about Bell number. Okay, what is a Bell number? जदि आमर पाखे गुटे ही एलिमेंट अच्छे तार संगे गुटे ही आसबा ओके नाउ जदि दुईटा एलिमेंट अच्छे सो इट इज 1 and 1 plus 1 2 आमर पाखे दुईटा इक्विवेलेंस रिलेशन आसबे जदि आसला 2 then 2 plus 1 3 and 3 plus 2 5 so जदि आमर पाखे तीनटा एलिमेंट अछन then we have three equivalence relation जदि आमर पाखे चारटा एलिमेंट अछन then we have 5 5 plus 2 7 7 plus 3 10 and 10 plus 5 so if we have one element you have only one equivalence relation जदि दुईटा एलिमेंट अछन so if n is equal to 1 then you have only one equivalence relation okay जदि आमर पाखे दुईटा एलिमेंट अछन then we have only two equivalence जदि आमर पाखे तीनटा एलिमेंट अछन then we have 5 equivalence relation पांचटा equivalence relation
जदि आमर पाखे चार्टा if n is equal to 4, if n is equal to 4, then we have 15 equivalence relation, and here starting from 15, 20, 27, 20, 37 and 52. If n is equal to 5, then we have 52 equivalence relation. Okay, this is our Bell number. 1, 2, 15, 52 are Bell number. So remember this. So जदि एबे हमर पाखे तीनटा एलिमेंट अछन, so the Bell number is 5. So we have 5 number of equivalence relation. Means we आमे 1 2 3 के पांचटा प्रकार पार्टीशन करि केता केता करि परमा एवरी पार्टीशन रो लागि गोटे इक्विवेलेंस रिलेशन. Okay, so we have first partition that is, okay, we can write this as P1. The partition is like 1, 2 and 3. Okay, now how to construct this partition in equivalence relation? You can go to number 4. Okay, I left it to you. Now partition 2, it is 1 and 2, 3. Partition 2 or partition 3 is just 1, 2 and only 3. Partition 4 is 1, 3 and only 2. And partition 5, the last one, is every element, that is 1, 2, 3. So we have only 5 type of partition, and for every partition there is an equivalence relation. So we have 5 equivalence relation from the set 1, 2 and 3. Okay, so this is of number 9. Now let's come to our next one, an important question. Let R be a relation on the set R. Okay, let's set up real number such that A relate to B if and only if A minus B is an integer. Okay, A minus B is an integer. Test whether R is an equivalence relation or not. So obviously it is an equivalence relation. Cancel lagi heba. A minus A is equal to 0, and 0 is an 0 belongs to Z for every element of A. So this implies A belongs to R for every element of A belongs to R. Real number ra konosi bhi element ke jodi hame minus karma, it is 0, and 0 is an integer, so we can say that R is reflexive. Now if A minus B belongs to R, that is A minus B belongs to Z, so this implies B minus A also belongs to Z. A minus B टा जदि integer हला, B minus A भी तो integer हवा. हाँ, it must be negative integer, but it is also a integer. So this implies BA also belongs to R. So you can say that R is symmetric. Now let's come to our another transitive. So AB, so AB belongs to R and BC belongs to R. So the AB belongs to R, so this implies A minus B belongs to Z, or you can say that let some integer K, and BC जेहेतु element of R, B minus C is equal to let some P. यदि हमें दुईटा के add करमा, B cancel out होगला, A minus C is equal to some K plus P. H K is an integer, P is also integer, so K plus P is also integer. So you can say that. So this implies A minus C is also an integer, or you can say that A minus C belongs to R or belongs to Z. So you can say that AC belongs to R. So R is transitive. So you can say that R is
equivalence relation. Now if R is an equivalence relation, jodi R ta equivalence relation hela, then what is the equivalence class of 1 and half? Now we have to find out the equivalence class of 1 and means ebe kana kaha hoiche 1 minus something belongs to Z. 1 minus something belongs to Z. Eta Z integer hitibar katha. So obviously it will be 1 minus 1 bola hitiba 1. Okay. Now 1 minus 2 minus 1, it is also an integer. 1 minus 1, 1 minus 2, 1 minus 3. This all are belongs to Z. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 and so on. Similarly negative 1, minus 1, minus 2, okay 0, I left it. So minus 3 and so on. Okay, बाकी कौनसी नंबर नहीं ना बेटा क्या ठीक है बाकी कौनसी नंबर की जब मैं 1 संगे माइनस करमा it cannot be is an integer. Okay, 1 minus जदि हमें half करमा half असला so it is not a integer, it is a rational number. So जदि हमें 1 संगे खाली integer number के लिए हमें subtract करमा then it is an integer. So the equivalence class of 1 is Z. H1 minus 1 is equal to 0 integer, 1 minus 2 is equal to minus 1 integer, 1 minus 3 is equal to minus 2 integer, 1 minus 4 is equal to minus 3 integer, 1 minus minus 1 it is 2 integer and so on. Now what is the equivalence class of half? So for that we have 1 by 2 minus something must be 0. 1 minus something must be an integer. So first one half, it must be half. Then एबे काना करमा half रे 1 1 1 1 ऐड करते जाओ कैंथि लगी integer difference 1 2 3 4 5 and so on minus 1 minus 2 0 मझिरे अछि छाडी दो minus 3 integer मानकर भितरे difference टा हला 1. So एबे काना करमा 1 by 2 रे 1 ऐड करो 3 by 2 5 by 2 7 by 2 and so on 1 minus करते जाओ minus half minus 3 by 2 and so on. So this all are equivalence class of कहते लगी जदि हाफ के इधर सबको स्थान माइनस करमा then it must give an integer. देखो ट्राई करो हाफ minus 3 by 2 is equal to minus 2 by 2 that is minus 1. Half minus 5 by 2 it is minus 4 by 2 it is minus 2. It is an integer. Minus 1 is also an integer and so on. बाकी जेन नंबर देखबो सब जगह रे यदि सबट्रैक्ट कलो हाफ संगे then it is must be an integer. So इटा थिला हमर क्वेश्चन नंबर 10. We have to find out equivalence class of 1 and half and other टा भी तमे बाहर करि पारो जदि अलगा कोनसे नंबर दे देला फर्स्ट सही एलिमेंट लिखि देला तापर 1 1 1 1 ऐड करतल जीवो आ 1 1 1 1 माइनस करतल जीवो you can get the equivalence class of that set if a minus b an integer. अलगा equivalence class लगे अलगा हिसाब करा हबो किंतु जेहेतु ए जगह a minus b ने b an integer अच्छे हमको 1 ऐड करबार. Okay, so for this up to question number 10 इटा question number 10 टा important question है previous year भी पढ़ी सारी चीज question टा so kindly ई question टा के बोल से देखिए. Okay, thank you.